aligned. The intent is to make it more aligned with how the reportings are to be there for interest or dividend received by a non-resident from bonds or GDR purchased in foreign currency. Please note that while this specific column which has been inserted in Schedule SI, that is there in the new idea. Earlier, what was used to be happen was that there was no specific column and there was a general column of set of 90 number others. Here, there was a drop down menu and you could have inputted that particular interest by selecting from the drop down menu. Things have been made more simpler by doing it this way. That's all. An important change, which we as professionals also come across, is in Schedule ATG. Earlier, the Schedule ATG looked like one has to provide the name, address, PAN of the donee. जिसको हमने donation दिया है, उसका नाम, address और PAN आप provide करें. Simultaneously, you have to bifurcate the amount of donation into cash or other modes and then mention the total amount eligible donation. Now, the besides this, there are two specific columns which have been inserted, which is one, giving the transaction number of the payment which is made to this particular donee trust. See, under ATG, no donation which you have made to this ATG approved trust or charitable societies exceeding 10,000 rupees in cash is allowed as a deduction. So if you are claiming more than 2,000, you have to specifically mention the transaction ID number of the banking channel from which you have made the payment to the donee. Also, you have to mention the IFSC of the bank account from where the donation was made. These all requirements are similar to the section 80 GGC, which is the donation to political parties, which was already there in ITR-2 for 25-26 assessment year, but it was not there in Schedule 80G for assessment year 25-26. So things have been more aligned in this way. Now coming to ITR-3. Okay. ITR-3, there are various changes on ITR-3. I'm specifically pickpocketing some major changes. And to highlight once a few, one of the changes is in the audit information of ITR-3. Earlier, you were required to put forward the date of furnishing the report, name of the auditor, membership number, FRN, PAN, UDIN, acknowledgement number, so and so. There were 6-8 requirements which were to be given. Now, 4 requirements have been cut short. Only the requirements are 5, which is date of furnishing the report, name of the auditor, firm. It's not the name of the auditor. Membership number also not to be given, FRN also not to be given, PAN or Aadhaar of the auditor or partnership firm or the proprietorship has to be given. And fourth is the acknowledgement number of the auditor. Other details have been completely wiped off. This is the change in ITRs. Now, there is also one important factor which I would like to discuss. And for that, I would like to take you to ITR-3 and I for assessment year 26-27 and ITR-3 for assessment year 25-26. And we'll try to look at the changes which are there. Because there is an important change or rather a clarity which has been introduced in audit information. So please bear with me. I'll take you through these changes. Screen, is it visible? Can you see the ITR forms which are there? पीछे की मुझे क्या चाहिए इसके पीछे की वर्किंग शिखर आप म्यूट हो गए हैं और आईटीआर फॉर्म नहीं दिख रहा है, अभी प्रेजेंटेशन ही दिख रहा है. अच्छा, okay, 1 second, sir. I'm so sorry. Yes, can you see now? Not exactly. Yeah, it is Yes, visible. can you see now? Yeah. Okay. So one important change which is actually introducing clarity is over here. Now on the right hand side of the screen is ITR-3 for assessment at 25-26 and on the left hand side is ITR-3 for 26-27. Okay. So if you see, we are focusing on the right hand side.
Now, what was there? The column number A1 says, are you liable to maintain accounts as per 44AA? Okay. Whether SSE in so and so, it's okay. Now, A21. If so, whether during the year the total sales or turnover is between 1 crore and 10 crores. So the options are yes, no turnover does not exceed crore, and no turnover exceeds 10 crores. So consider a case or a taxpayer who is not having, who is just a normal person. He is not a person who is very easy with English, and he has a turnover of exactly 1 crore rupees. Now, where does he fulfill? Where does he put his option? उसका ऑप्शन कैसा है कि टोटल टर्नओवर इज बिटवीन 1 crore and 10 crores. Yes. No, turnover does not exceed 1. So no turnover does not exceed also 1 crore. Turnover is between 1 crore and 10 crores. उसको इंटरप्रिटेशन वाइज भी अगर कोई देखेगा तो 1 crore भी yes can be inputted in that way. This particular confusion, which could have been arise in the man of a man who is not having of a professional sound knowledge, it could have arisen. It has been clarified in ITR-3 of 2627, where you specifically mention what is the amount of turnover up to 1 crore, more than 1 crore, and up to 10 crores, and more than 10 crores. So it's just a clarity which has been introduced in ITR 3 for 2627, where you're in very easy English, it has been specified like this. Now, moving forward, there's a second point of having received cash or paying cash exceeding 5% of the total turnover. So earlier, कैसा होता था? If yes, okay, if suppose your turnover is between so and so, whether aggregate amounts received for sales so and so in cash does not exceed 5%. So what could you have selected? अगर आपका 5% ही है मान लीजिए तो आप क्या सेलेक्ट करेंगे? यस सेलेक्ट करेंगे कि आप नो सेलेक्ट करेंगे? कि नो, माय कैश पेमेंट डज नॉट एक्सीड 5%, और यस, माय कैश पेमेंट डज नॉट एक्सीड 5%. There is somewhere a possibility of a differential opinion in the mind of a general man who is not having sound knowledge. So here also they have clarified up to 5% and more than 5%. So all of these for two particular changes are to make sure that your English language does not confuse the taxpayer, but it becomes of an easy parlance. Okay. Now, one more. Okay. Here is very important. I actually have taken the two ITR forms just so that you get both the clarity is there in the minds of the members of how the changes have been made. This is a very important change in Form 10IA. Now, what is Form 10IA? Section 115 BAC, subsection 6 is very important to look at. What is Section 115 BAC? हमने ये जानते हैं न्यू regime and old regime. New regime and old regime for taxpayers, individual taxpayers. In those cases, you have to decide whether you are paying taxes in the old regime or under the new regime. Old regime में the taxes rates, the slab rates have been specified, deductions have to be given, and that's how it computes. And the new regime, deductions are generally not given, some deductions are given, and you compute the taxes at a lower tax rate. Now, what was there and why there was a need to bring out this change? And for that, we'll have to understand the intent of Section 115 BAC. Okay. Now, as we all know, Section 115 BAC has been introduced by by the Finance Act 2020. Okay. And in 2020, by Finance Act 2023, the new regime had been made the default regime, and the old regime was put under the optionable clause. तो इसी समय क्या हुआ कि they introduced a new section which is Section 115 BAC subsection 6. 115 BAC subsection 6 को लाने का पर्पस क्या था? ओके, इसका पर्पस ये है कि अगर आप ओल्ड regime चूज कर रहे हैं, ओके, आप फॉर एग्जाम्पल just listen to this point first. Finance Act 23 had made this change applicable from assessment year 24-25. Okay.
So from 1st April 2024, the assessment year commencing on 1st April 2024, which is 24-25, you have the option to choose the old regime. And if you don't choose the old regime, then you will be taxed under the new regime. ओके, तो 24-25 का जब मैं ऑप्शन चूज करूंगा ओल्ड ओल्ड regime, I'm so sorry, there's some disturbance. हाँ, अगर मैं ऑप्शन चूज करूंगा असेसमेंट ईयर 24-25 का मुझे आईटीआर भरना है और मैं ओल्ड रिजीम में जाना चाहता हूं, तो मुझे फॉर्म 10 IEA भरना पड़ेगा बाय विद इन द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द आईटीआर. ओके, नाउ व्हाट डज 115 BAC सबसेक्शन 6 से? 115 BAC सबसेक्शन 6 ये कहता है कि अगर आपको ओल्ड रिजीम में जाना है तो उसके लिए आप और ओल्ड रिजीम में जो ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे और फिर अगर न्यू रिजीम में आना चाहते हैं तो उसको सिर्फ एक ही बार विड्रॉ कर सकते हैं. उदाहरण के तौर पे ये सुनिए कि 24-25 वाले असेसमेंट ईयर से ये लागू हो गया. तो मैंने जब 24-25 असेसमेंट ईयर का आईटीआर दाखिल किया, उस समय मैंने उस समय मैंने ओल्ड रिजीम में चूज किया. तो मतलब मैंने ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया कि मुझे न्यू रिजीम में टैक्स नहीं भरना, मुझे ओल्ड रिजीम में टैक्स भरना है. अब मैंने 25-26 में ये ऑप्शन को विड्रॉ कर लिया. जो मैंने ऑप्शन एक्सरसाइज किया उसको मैंने विड्रॉ कर लिया 25-26 में, क्योंकि मैं वापस से न्यू रिजीम में चला. अब 26-27 में मैं वापस से इस ओल्ड रिजीम में नहीं जा सकता. दिस इज द लॉ एज ऑन द करेंट डेट. If I to read, it is saying, provided that the option under clause 1 is for ITR-3, okay, which is non-salary. Once exercised for any previous year, once exercised for any previous year, can be withdrawn only once for a previous year other than the year in which it was exercised. So, if I'm exercising in assessment year 24-25, I am withdrawing in assessment year 25-26. So I cannot again choose this option for exercising in 26-27. Okay. So if you look at the ITR now, what does it say? Do you have income from business or profession in the assessment year? You have to select yes or no. If answer to B is yes, you have filed ITR 3 and 4 and filed ITR form 10IA within the due date for any earlier year. So हम एक एग्जांपल लेते हैं इसमें कि 24-25 में मैंने ITR 3 या 4 फाइल किया है और 10IA को भी फाइल किया है बिकॉज आई हैव चोजन द ऑप्शन टू फाइल माय ITR इन ओल्ड रिजीम. ओके, सो व्हाट डज इट से नाउ? So I will say yes, okay, because I am choosing old regime. If answer to is yes, then furnish form 10IA acknowledgement number जो मैं सबमिट करूंगा. उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा? Have you filed ITR 3 and 4 in the past and have re-entered the new regime by filing 10IA for any assessment year subsequent to that assessment year? अब मैं 25-26 में न्यू regime में आ गया, तो मुझे यहाँ पे yes सेलेक्ट करना है. फिर मुझे बोलता है if answer to this is yes, then acknowledgement number. If answer to this is no, then have you furnished NIA for new re-entering into new tax regime for 26-27? मतलब अगर मैंने 25-26 में भी ओल्ड रिजीम फाइल किया होता तो मेरे पास में ऑप्शन है कि मैं 26-27 में उसको विड्रॉ करके 26-27 का आईटीआर न्यू रिजीम में फाइल कर सकता हूं. करेक्ट, दिस इज द पोजिशन. सो इफ यस देन प्रोवाइड द एक्नॉलेजमेंट नंबर. इफ नो देन फर्निश द आईटीआर इन ओल्ड टैक्स regime. So if you have once exercised the option, then if you have withdrawn the option, then you cannot choose that option again, is what the law is saying. And because ये जो स्टेप जो प्रोसीजर है ये असेसमेंट ईयर 24-25 से लागू हो गया एंड दिस इज द थर्ड ईयर जब वो एक्सरसाइज करने के ऊपर और ये सब क्वेश्चंस आएंगे किसी के भी मन में, रादर द टैक्स अथॉरिटी के मन में, कि आपने वापस से स्विचिंग फॉरवर्ड तो नहीं कर दी. तो ये क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए इन्होंने आईटीआर फॉर्म को बहुत क्लियरली अब बनाया है कि 24-25 में अगर आपने विड्रॉ किया ऑप्शन, चूज किया ऑप्शन, 25-26 में विड्रॉ किया, तो 26-27 में आप वापस से ओल्ड रिजीम में नहीं जा सकते. दिस इज हाउ दे मेड इट वेरी क्लियर इन द वे ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर इन दिस आईटीआर फॉर्म.
If anybody has any questions in this case or until here, we can address. शिखर जी वो चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल देंगे जिनके भी हैं, आप प्लीज कंटिन्यू करें. Shikhar ji, we will be taking all the queries at the end of the Sure, session. sir. Sure, sir. Sure. Okay, fine. Okay. Now, coming forward, there is a good change in the trading account of Part A in ITR-3. कैसा होता था? और rather इसका concept समझते हैं हम सबसे पहले. What is a speculative transaction? In general parlance, what we understand to be speculative is that we are entering into a contract. कि I assume that the price of something can be 10 rupees और दूसरा बोलता है नहीं प्राइस मैं assume करता हूं to be 12 rupees. जो जीता ये सट्टा है, जो जीता उसका मुनाफा. देयर इज नो एक्चुअल डिलीवरी. कुछ सामान खरीदना आदान प्रदान नहीं होता. सो दिस इज काइंड ऑफ अ स्पेकुलेशन कि मैं स्पेकुलेट कर रहा हूं कि दाम ऐसा होगा, भाव ऐसा बढ़ जाएगा. इन 43 सबसेक्शन 5 दिस स्पेकुलेशन ट्रांजैक्शंस आर कवर्ड अंडर द एक्ट. स्पेसिफिकली सेक्शन 43 5 में एफएनओ व्हिच इज डेरिवेटिव्स, कमोडिटी डेरिवेटिव्स एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को एक्सक्लूड किया गया है बिकॉज देयर इज नो एक्चुअल डिलीवरी. So this is actually not a speculative transaction. Okay. Other transactions can be speculative, but this is not a speculative because 43 subsection 5 clearly बोलता है कि नहीं ये नहीं है. कैसा हो रहा था? असेसमेंट ईयर 25-26 तक ITR-3 में एक ट्रेडिंग अकाउंट था विच इज पार्ट ए ऑफ पीएनएल और हमारे पास एक नेक्स्ट था पार्ट बी में एक स्पेकुलेटिव या इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज, उसका ग्रॉस टर्नओवर, उसकी एक रिपोर्टिंग होती थी. what was being going on, इसके इंट्राडे का एक ट्रांजैक्शन होता है जिसको स्पेसिफिकली ट्रेडिंग अकाउंट में आईटीआर 3 के 25-26 के ITR-3 में इंट्राडे ट्रेडिंग का टर्नओवर और इंट्राडे ट्रेडिंग का इनकम इन दोनों को लिखा है. यहां पे इंट्राडे ट्रेडिंग इट्स एक्चुअली शेयर परचेज. आई एम परचेजिंग शेयर्स. Intraday में specifically are all the brokers and all of us are very would be aware कि intraday में ऐसा T+1 की डिलीवरी नहीं होती शेयर्स की. It is rather the same day delivery and same day selling off. This is what intraday is. Intraday trading क्योंकि it's a delivery of a share, it is not specifically excluded under 40. It is a transaction. I agree with that. Point is, it is not excluded under 43(5) because there is some terminology difference in the minds of the legislature, which it believes कि यहाँ actual delivery भी futures और options में आप actual delivery नहीं कर रहे हो तो आपने उसको speculative से बाहर कर दिया. But intraday trading में भी आप actual delivery of shares तो कर नहीं रहे, still आपने उसको speculative में रखा है. So in simple words, what I'm trying to say इसके इंट्राडे ट्रेडिंग विच इज शेयर्स का आदान प्रदान करना, उसको इन्होंने स्पेसिफिकली पार्ट ए पीएनएल में इंट्रोड्यूस किया है और इनकम फ्रॉम स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज में इसको बनाया है पार्ट. असेसमेंट ईयर 25-26 तक क्या हो रहा था? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के सेल परचेज को भी लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में जोड़ रहे थे. उसकी वजह से दिस इंट्राडे की ट्रेडिंग की इनकम जो डायरेक्टली अगर आप डालोगे आईटीआर में तो वो तुरंत आपको इनकम फ्रॉम स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी में दिखाएगी. इसकी वजह से फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की इनकम भी स्पेक्युलेटिव इनकम बन रही थी. इसको रोकने के लिए, इसको तोड़ने के लिए इन्होंने पार्ट ए ट्रेडिंग अकाउंट में स्पेसिफिकली एक हेड इंट्रोड्यूस किया है विच सेज टर्नओवर फ्रॉम एफएनओ एंड ग्रॉस इनकम फ्रॉम एफएनओ. अगर आप आईटीआर फॉर्म को देखिए तो इनकम फ्रॉम एफएनओ को स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी की जो टोटल इनकम हो रही है वहां से बाहर कर दिया गया है. So the concept remains and rather becomes strengthened by the fact that income from futures and options and income from intraday trading are two different concepts. Why? It's not because of our general understanding, it is because of the law that provides so. Futures and options को speculative नहीं माना जाता है. क्यों? क्योंकि उसके लिए स्पेसिफिकली एक प्रोवाइजो है सेक्शन 43 सबसेक्शन 5 में. इंट्राडे ट्रेडिंग को स्पेक्युलेटिव माना जाता है. क्यों? क्योंकि उसके लिए कोई स्पेसिफिकली प्रोवाइजो एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं किया गया है. इंट्राडे ट्रेडिंग में देयर इज नो
actual exchange of shares. It is actually I'm purchasing a share and immediately उसको day end पे मैं square off कर देता हूँ. This is what intraday is. So the law has become, they have tried to implement the law by means of introducing a separate column for FNO and making sure कि वो जो FNO की इनकम है उसको आप speculative income में नहीं जोड़े, उसको आप normal business income में जोड़ दें. This is how the law is. The fifth important change which we are looking at is in the case of NRs. Now, we all know that there's a presumptive scheme of NRs of having shipping business, oil exploration, operation running of aircrafts, civil construction and turnkey projects, जो 44BB वाले sections होते थे, उसकी इनकम को स्पेसिफिकली लिखा गया था आईटीआर में, 25-26 के आईटीआर में पहले से लिखते आ रहे हैं, डीम्ड इनकम बना देते हैं. बट आईटीआर 3 में स्पेसिफिक किया है कि टर्नओवर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बिजनेस इज आल्सो. Earlier, there was no field which was open where you could mention the turnover from this kind of business specifically. Now, a gross turnover ki field has been opened in ITR 3 for 26-27. It's a small change. This change is actually very relevant. ITR 3 25-26 में 80I की डिडक्शन एक होती है हम लोग के पास में, जो ये कहता है कि अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अगर आप एक बिजनेस शुरू करते हैं एलिजिबल आर्टिकल और प्रोडक्ट का, या फिर आप मैन्युफैक्चर करते हैं उसको, अगर आप शुरू कर देते हैं एक पर्टिकुलर ड्यू डेट तक, विच इज आई थिंक इन 2007 और समथिंग इट वुड हैव बीन देयर, और 2017 आई एम सो सॉरी इट वुड हैव बीन देयर, तो 10 साल की इनकम आपको, आपकी उसमें प्रॉफिट्स का आपको डिडक्शन मिलता. एक्सप्लेनेशन अगर आप पढ़ेंगे 80I की, तो उसमें 8 स्टेट्स मेंशन है जिसमें सिक्किम भी आता है. बट लेकिन आज तक ITR 3 के 25-26 तक सिक्किम एक कॉलम में था ही नहीं. उस सिक्किम वाले स्टेट को इन्होंने अब इंट्रोड्यूस किया है 26-27, वेयर दे सेइंग कि अगर कोई एसएससी यहाँ बिजनेस शुरू कर देता है 2017 से भले कर रहा होगा, तो 10 साल के लिए उसकी जो प्रॉफिट्स की जो डिडक्शन मिलना था, वो अब आप सिक्किम में आप टिक करेंगे कि हाँ आपने सिक्किम में आपका स्टेट है जहाँ पे आपने इसको मैन्युफैक्चर किया है, तो अब आपको डिडक्शन मिल जाएगा. This is just to commensurate the things with the law. Now, Schedule IF. So this is actually an information regarding the partnership firms in which the taxpayer is a partner. I have tried to bring in the screen that what was the schedule, and on the highlighted portion only tells कि ये दो specific columns हैं जो पहले नहीं थे but अब आ. So if you are a partner in a partnership firm, then you have to report the amount of interest you are received, amount of remuneration you are received, because both of these two things are taxable in your hands. Share and profit तो 10(2)A में we have already known कि वो exempt होता है, but interest and remuneration are taxable in our hands, जो आप भले आप अपने ITR में रिपोर्ट करोगे अंडर सैलरीज हेड, बट यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन देनी भी उन्होंने कंपलसरी कर दी है. So if you report two things also. Now moving forward, I would like to take a discussion on BMA in the ITR form. Schedule FA, we all of us know that Schedule FA is there. Okay. Now, what Schedule FA says is that you have to report foreign interest, foreign assets, foreign interest, foreign investments, foreign equity interest, and so and so on. If you are having that particular asset outside India, then you have to report that on a calendar year basis. That means कि आज की डेट में मैं 31 दिसंबर 2025 तक का, 1 अप्रैल 25 से लेके 31 दिसंबर 25 तक का मुझे शेड्यूल एफए में रिपोर्ट करना है. Okay. Now, the penalty provisions are there in section 43 of black money law, which state कि if you fail to furnish any information or you furnish inaccurate particulars in the return relating to any asset which is located outside India, then AO may direct the person to pay a penalty of 10 lakh rupees. That's in simple terminology. So what we understand from this is that there are two limits. The first limit is that you have to fail in furnishing any information, or that you furnish any information but that is inaccurate. So both limbs are independent of each other and are qualified by the terminology or. Once we have learned that, now there may be two situations.
The first case is that you report the assets in Schedule A, but you don't report in Schedule FA. So which will take the penalty? And the case two is that you take it in Schedule AL, but you report it in Schedule FA. Then under which name penalty can be levied. So let's take on the first case that you reported in Schedule AL, but you did not report in Schedule FA. Can you levy penalty at all? If you have to levy penalty, then you have to be fulfilling either of the two limits. तो अगर हम ये देखें कि ये किस लिम में फॉल करेगा, मैंने व्हाट डज ब्लैक मनी लॉ से? ब्लैक मनी लॉ सेज फेल टू फर्निश एनी इंफॉर्मेशन और फर्निश इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स इन सच रिटर्न। तो क्या अगर मैंने उसको अपने शेड्यूल एएल में रिपोर्ट कर दिया, तो डज इट मीन दैट आई फेल टू फर्निश एनी इंफॉर्मेशन, और डज इट मीन कि मैंने गलत इंफॉर्मेशन फर्निश करी है इन सच रिटर्न? So there is actually, this is something which is there in the outward approach of outward members, कि वहां पे भी ये डिस्कशन होता है कि क्या हम अगर इंफॉर्मेशन मान लीजिए गलत हेड में भी शो कर देते हैं, आज मुझे एक हेड में इनकम शो करनी थी लेकिन मैं उसको गलत हेड में शो कर देता हूँ, तो क्या मुझ पे पेनल्टी के या प्रावधान एप्लीकेबल हो जाएंगे? तो उसके लिए देर आर वेरियस डिसीजंस which are there from black money law perspective also and from the general perspective also, which provide an insight as to what is this particular thing कि हम क्या हम अगर किसी और हेड में भी रिपोर्ट कर देते हैं तो आर वी फेलिंग इन फर्निशिंग एन इंफॉर्मेशन? So from this perspective, I would like to take you through this particular schedule. Schedule FA ये बोलता है specifically, which is this particular slide is extracted from the income tax portal only, कि this schedule FA is applicable to resident assessees who are owning some assets outside India. This schedule requires reporting of some various details and the structure of the schedule is as under. So ITR फॉर्म मुझे क्लियरली बोलता है कि आपको यहां पे रिपोर्ट करना है। उसके लिए उन्होंने सेपरेट एक शेड्यूल बनाया है कि आपकी कोई फॉरेन एसेट है वो भले कहीं और से मिस हो जाए, लेकिन अगर ये कॉलम आप भरोगे तो ऑफिसर के पास में या सबके ऑफिसर्स के पास में या हमारे पास में एज एन अथॉरिटी, या अगर हम किसी और अथॉरिटी जनरल अथॉरिटी को भी देखेंगे तो उनके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि आपके पास में फॉरेन एसेट कितना है। इसमें देर इज अ दिल्ली हाईकोर्ट डिसीजन। नाउ दिल्ली हाईकोर्ट डिसीजन को इन नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्लैक मनी, बट वील इट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अदर लॉ. So what Delhi High Court in Auric Investment has held that in 2007, that where a taxpayer has merely interpreted in trading speculation loss as a business loss, although उसका speculation loss ही था, but उसने अगर business loss की तरह show किया, उसने transactions को पूरा report किया. Now this does not mean that you are concealing any information or you are furnishing any inaccurate particulars. मतलब वो कुछ छुपा नहीं रहा है, उससे मिस्टेक हो गई इन रिपोर्टिंग अंडर डिफरेंट हेड्स. दिस डज नॉट मीन दैट यू आर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम समवन. सो कैन यू से दैट अगर मैंने शेड्यूल एएल में रिपोर्ट कर दिया और शेड्यूल एफए में रिपोर्ट नहीं किया, सो आई एम हाइडिंग समथिंग फ्रॉम समवन? देन कैन बी अ इंटरप्रिटेशनल इशू, राइट? Now this was actually in case of a BMA, Madras High Court was considered Srinidhi Karti Chidambaram. It's a 2018 decision. इसमें कैसा था कि फॉरेन एसेट्स आर एक्वायर्ड विद टैक्स पेड मनी. So this is a very important fact which the Madras High Court had noted, कि अगर टैक्स पेड मनी से अगर आपने कुछ खरीदा है तो यू आर नॉट हैविंग एनी अनडिस्क्लोज्ड इनकम. Once you are not having any undisclosed income, what you have acquired from that income which is tax paid is actually not undisclosed to the extent that you have acquired from the tax paid money. और प्लस आपने इसको शेड्यूल एएल में भी डिस्क्लोज कर रखा है. So there, when there is no, allegation of any unaccounted money or any black money, then can you trigger black money law or evasion of black money law? So considering this and the other merits of the case, Madras High Court specifically deleted the addition of 10 lakh rupees, noting कि tax paid money है and disclosure schedule AL में है. There is an obligation, there is no allegation of unaccounted money. So penalty under 43 can be deleted in this case.
इसके लिए मैं सेक्शन 4 को भी एक बार पढ़ना चाहूंगा कि व्हाट डज सेक्शन 4 से। सेक्शन 4 इज अ चार्जिंग प्रोविजन। Subject to the provisions, the total undisclosed foreign income and asset of the SECI shall be. Please note that subsection clause A में क्या बोलता है? Income which has been not disclosed in the ITR. इनकम नॉट डिस्क्लोज इन आईटीआर को स्पेसिफिकली कहा गया है कि ये इनकम अगर आईटीआर में डिस्क्लोज नहीं करेंगे आप, तो इसको हम अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम मान लेंगे। लेकिन एसेट के लिए कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि आपको उसको आईटीआर में डिस्क्लोज करना इज एन ऑब्लिगेशन, तभी हम उसको अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट मान लेंगे। सो इसका कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपने अपना अनडिस्क्लोज्ड एसेट अगर आईटीआर में डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन उसको टैक्स पेड मनी से खरीदा है, और सेकंड चीज, उसको आपने डिस्क्लोज किया है भले इन शेड्यूल ए, नॉट इन शेड्यूल एफ, then there is a line of thought to say that this is not an disclosed asset. While there can be an interpretation on the same hand कि लुक आपके लिए शेड्यूल एफए को स्पेसिफिकली इसी चीज को इंट्रोड्यूस किया गया था कि आप उस चीज को डिस्क्लोज करें, बट अगर मैं उसको डिस्क्लोज कर रहा हूं नॉट इन द पर्टिकुलर शेड्यूल बट इन द अदर शेड्यूल, एंड दैट इज मेनली एन इंटरप्रिटेशनल चैलेंज फॉर मी, बट मैंने उसको एएल में डिस्क्लोज किया है, then there can be a breather for me basis Madras High Court in Srinidhi, that there can be a chance to say that text section 10 of BH 43 of BMA is not applicable. Now let us look at the second way. Inaccurate particulars का मतलब क्या है? अगर मान लीजिए ऑफिसर को मैं इस चीज पे हरा देता हूं कि मैंने फेलियर नहीं किया है फर्निश करने का इंफॉर्मेशन में, कुछ भी फेलियर नहीं किया है इस कारण से क्योंकि मैंने शेड्यूल एएल में डिस्क्लोज किया है, तो क्या असेसिंग ऑफिसर और की टर्मिनोलॉजी से मुझ पे लिंब 2 पे आ सकता है और ये मुझे कह सकता है कि आपने इनएक्यूरेट पर्टिकुलर फर्निश किया है? तो इनएक्यूरेट पर्टिकुलर फर्निश करने का मतलब क्या होता है? इनएक्यूरेट का मतलब ये भी होता है क्या कि मैं फर्निश किया है, सिर्फ इतना होता है कि ये भी होता है कि मैंने फर्निश ही नहीं किया है? से कि आप सेक्शन आप नहीं किया है, सो यू हैव, because you have omitted to disclose, then you are following incorrect particulars in the idea. So incorrect particulars का मीनिंग हमने ये समझा सुप्रीम कोर्ट में, this is 2007 decision case by, this is the concealment of income, छुपाना और जिसे देना, very different. Dilip Shroff, Supreme Court 2007 decision again said concealment is an inaccurate particulars are different. Concealment and furnishing inaccurate particulars are different act of part of the SSC. This is what the Supreme Court in Dilip Shroff has said. Supreme Court. We are omission from the return. So the return of this does concealment and furnishing inaccurate. And there is one more decision of Kolkata Tribunal in 2015, Kartik, which is what conceal means to hide observation. And on the other hand, inaccurate particulars means such information is not correct, true or accurate, then it would amount to furnishing of inaccurate particulars. So there can be a line of thought to say कि inaccurate particulars जब आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन फर्श करी है तब उसको इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स माना जा सकता है। अगर आप इंफॉर्मेशन फर्श नहीं करें तो इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स, इट्स अ पॉसिबल थिंग कि उसको नहीं माना जा सकता है। सो देयर कैन बी अ स्कोप और कैन बी अ लाइन ऑफ थॉट टू आर्ग्यू इंफॉर्मेशन मैंने इसलिए फेल नहीं किया क्योंकि मैंने शेड्यूल एयर में रिपोर्ट किया, टैक्स पे मनी से किया, देयर इज नो इंटेंट। inaccurate particulars. So sorry, I'm getting शिखर जी, हेलो। जी सर, जी सर। शिखर जी, आपकी आवाज ना बीच में बहुत ब्रेक हो रही है। आई थिंक एक बार आप नेटवर्क अपना चेक कर लीजिए प्लीज। 1 second सर। कि बैटरी भी ड्रेन हो रही है, एक बार देख लीजिएगा सॉरी फॉर द चार्जर। ट्रबल।
Is it better now? The voice is Yeah. better now? Yes. I hope मिस तो नहीं हुआ है जो मैंने कहा है, या फिर मैं वापस से रिपीट करूं? नहीं ठीक है, थोड़ा सा, हाँ। नहीं ठीक है, बेनामी में ठीक है। एक बार आप देख लीजिए, आपकी बैटरी ड्रेन हो रही है, तो बैटरी आपका चार्जर लगा है कि नहीं लगा है? यस सर, मैंने वापस प्लग इन कर लिया सर। आई एम सो सॉरी, थैंक यू फॉर दैट। So accordingly, we got this particular clarity कि यहाँ पे there can be a scope to argue that if I have not failed to furnish information and if I have not even furnished wrong particulars, then there can be a scope to say कि no section case 1 में मैं इसको बेनामी इसको penalty से बचा सकता हूँ। The second case is that you did not report in schedule A but you reported in schedule FA. So here the answer is pretty simple, that what is section 43 of BMA is that it requires you to disclose the asset only. डिस्क्लोजर के लिए ही बनाया है ये शेड्यूल, और आपने अगर उसको डिस्क्लोज कर दिया है तो शेड्यूल एएल में रिपोर्ट करना इज अ सेकेंडरी थिंग, बट शेड्यूल एफए में रिपोर्ट करना, शेड्यूल एएल बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर असेसमेंट्स, बट शेड्यूल एफए इज समथिंग व्हिच बीएमए डायरेक्टली हैंडल्स, and that is why section 43 of BMA's penalty cannot be levied, because